गुड मॉर्निंग क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हैं आज के दिन आप। मंडे है, नया हफ्ता शुरू हो रहा है, हो चुका है वैसे, लेकिन एज ऑलवेज मैं हूं आपके साथ हर मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पर। कॉल्ड आर यू हियर फॉर द क्रिकेट, ब्रॉट टू यू बाय डेफा न्यूज। द लाइव स्ट्रीम इज कॉल्ड कॉफी एंड आई बी वंस अगेन शो माय फेवरेट कॉफी मग from the lovely people at Coffee Culture Bhilwara, Rajasthan, RJ06 Coffee and Cricket with me, Jamie Alter. बताइए आप लोग कैसे हैं, कहां से जुड़े हैं, किस किसने कल के क्रिकेट पे नजर दिया, खासकर टेस्ट मैच. I know it goes till 2:30, so it's really hard to stay focused all the time. But we're here to discuss this channel, dosto. So stick around, ask your questions. Let's keep the discussion to India West Indies. Let's not get into Harmanpreet. Let's not get into India A versus Pakistan A in that emerging players tournament Asia Cup final. Let's stick to India versus West Indies because जहाँ पे लग रहा था बहुत लोगों को कमेंट्स के बेसिस पर कि यार बारिश होगी, वेस्ट इंडीज ने काफ़ी अच्छे तरह से झंडा गाड़ दिया, फॉलो ऑन विल बी अवर्टेड, दिस इज हेडिंग फॉर अ ड्रॉ. पहले मोहम्मद सिराज और उसके बाद रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन ने जो अप्रोच अपनाया अपनी बैटिंग में, इट जस्ट शोड समथिंग विच फ्रैंकली बहुत रेयर है दोस्तों इंडियन क्रिकेट के हिसाब से. दिस वाज अ पुश गिवन द फैक्ट दैट रेन इज फोरकास्ट ऑन डे 5. दिस वाज अ पुश, मेरा मानना है बहुत बहुत सिमिलर जो इंग्लैंड टीम ने ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में किया था डे 3 और खासकर डे 4 पे. बारिश आई ऑफ कोर्स एंड दैट मैच वाज वॉश्ड आउट. नॉट अ सिंगल ball was bowled on day 5 at Old Trafford. England cannot win the Ashes now. The Ashes have been retained by Australia. आखिरी टेस्ट मैच तो कुछ दिन बाद ओवल में शुरू होगा. England will of course hope to win that because they've been the dominant side in the last 2 टेस्ट मैचेस. लेकिन इत्तेफाक की बात नहीं है दोस्तों, मेरा मानना है कि जिस अंदाज से जायसवाल who hit the 6 in the first over of an innings, walking out flat-batted. Rohit Sharma, his fastest test century. ईशान किशन, a test 50 in 33 balls. ये सब देख के दोस्तों मुझे लगा कि इत्तेफाक की बात नहीं है कि जो कोशिश बैज़बॉल वाली टीम ने 3 दिन पहले करी थी, 2 दिन पहले करी थी, वो अब इंडिया भी अपनाने की कोशिश कर रही थी. बिकॉज इट वॉज वेरी एविडेंट दे वॉन्टेड अ रिजल्ट. दे ऑलरेडी हैड अ बिग लीड, वो फॉलो ऑन इनफोर्स नहीं कर सके. But still, with a good lead, they said, you know what, let's go out and let's... Because ये पहली बार नहीं है जब किसी इंडियन टीम ने, किसी भी टीम, forget the conditions, forget the quality of team, किसी भी इंडियन टीम ने एक और टीम के सामने अच्छी लीड लेकर दोबारा बैटिंग करनी आई. ये नई बात नहीं है, बट नॉर्मली यू डोंट सी प्लेयर्स गो आफ्टर देम लाइक दिस. एक आध बार वीरेंद्र सहवाग ने किया होगा, बट दिस टू माई माइंड, और मैं 1994-95 से काफ़ी करीबी से टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ, इंडियन टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई इंस्टेंस एग्जांपल याद नहीं है जब दोनों ओपर्स ने आते ही एक नहीं दोनों ने चौके छक्के लगाने शुरू किया था. बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, दे वांट टू विन अ टेस्ट मैच, दे आर नॉट हियर टू ड्रॉ, दे आर डेफिनेटली नॉट हियर टू लूज. और अगर बैसबॉल वाली इंग्लैंड टीम ये 2-3 दिन पहले नहीं करती तो हो सके इंडिया भी नहीं करती. सो इज दिस इंडियाज अटेम्प्ट एट ट्राइंग बैसबॉल? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं. शुरू करते हैं निहार से. निहार कह रहे हैं, हेलो, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन. आशुतोष इज आस्किंग, शुड ऑल टेस्ट हैव अ रिजर्व डे as rain might help West Indies? Definitely. I mean, this is not something new that we're discussing, but I think आजकल के टाइम पे when there's just so much cricket to give an extra day to every single test match, every single team, yes, it should be there. But how are you going to add that in this already packed calendar when Test cricket is struggling for survival because of T20 leagues, when one days are becoming so redundant? It's a good idea, but frankly, if it's not happened till now in 150 years of Test cricket, I don't see it happening again. Kiran, the rain prediction is not that good, unfortunately. There is rain coming. We're probably going to lose a good amount of overs, which is why India need to strike in that first session, get as many wickets. Once again, no surprise, Ashwin was the leader in the second innings, but I want to speak about Mohammed Siraj. You talk about Bazball. Bazball is also a bowling approach. It has to become a bowling approach. And you look at the scorecard. Overnight, West Indies 229 पे 5. They kept India in the field for a long time. They were made to struggle. They were made to work hard. They needed early wickets, and to go from 229 for 5 to 255 all out needed a very special approach. And not surprising, the leader of India's bowling attack, Mohammed Siraj, the most experienced pace bowler in this current squad, उनके हाथ से ये जो एक downfall रहा,
उन्होंने शुरू किया था। मुकेश कुमार ने पहला विकेट लिया, मैं मानता हूं, but it was Mohammed Sirah taking those 4 wickets to finish with 5 for 60. That was the period where India would have believed कि हाँ भाई अब ड्रॉ छोड़ो, अब हमारे पास जीतने का बहुत बहुत अच्छा मौका दिया है मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार ने। लेट्स गो आउट एंड गो ट्राई समथिंग डिफिकल्ट। आई लाइक आई सेड, मैंने अब तक दो इंडियन ओपनर्स ने इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से ऐसे बैटिंग नहीं करी। Hitting a 6 over cover, walking out to bowlers and driving them, putting up 23, 27 in 2 overs, rattling along. दोस्तों ये 98 जो ये पारी थी, ये 12 ओवर के अंदर 98 की पारी बनाई। और जब इंडिया का 100 आया था, दिस इज द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस, जहां डेटा अवेलेबल है, दिस इज द फास्टेस्ट टीम 100 इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। यानी कि 150 साल से ज्यादा जो ये गेम चल रहा है, कभी भी 12.2 ओवर्स में किसी भी टीम ने 100 खड़ा नहीं किया था। दिस इज समथिंग रेयर एंड आई से इट अगेन, this was India's attempt at trying Bazball because they saw England under Ben Stokes and McCullum trying to push for a result because of day 5 was always going to be rained out. यहाँ पे भी आज के दिन यानी कि day 5 बारिश का forecast काफी है। To my mind it was that simple. India said, you know what, let's try something, let's try Bazball. And अगर इंडिया जीत जाती है तो वो जो पीरियड था जब जायसवाल और खासकर रोहित शर्मा ने 98 लगाए 12 ओवर के अंदर, this will be the turning point of this test match, as well as Mohammed Siraj taking those 5 wickets. Let's take some more questions. West Indies के साथ सभी राइट हैंडर्स लेफ्टी बैटिंग करना चाहिए और वाइस वर्सा, इनसे जीतने में क्या गौरव? भाई आपको मैच जीतना है, आप वहां ड्रॉ करने के लिए नहीं गए, आप वहां हारने नहीं गए। यू नीड इन्हीं टीम्स को जीतकर तो टीम WTC फाइनल तक पहुंची। बिल्कुल वेस्ट इंडीज की टीम बहुत खराब है, कंडीशंस उनके फेवर में नहीं थी, लेकिन आपको मैच भी तो जीतना है ना, तो हैट्स ऑफ टू देम। ये तो ऑब्वियस था कि वो तेज खेलेंगे ही, भाई ऑब्वियस तो था, लेकिन क्या आपने कभी देखा है किसी भी इंडियन ओपनर्स को इस किस्म की बैटिंग करते हुए? मैं 94 95 से देख रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत बहुत बार अलग अलग इंडियन टीम्स के पास ऐसा मौका था लीड को तेजी से बढ़ाने का, लेकिन इतने सालों में मैंने 2 ओपनर्स को एक साथ कभी ऐसी बैटिंग करते हुए नहीं देखा। इसीलिए 100% मेरा यह मानना है कि ये उनका बेसबॉल से इंस्पायर्ड अटेम्प्ट था। अगर ये पहले करते तो भाई इंस्टेंसेस कहां हैं? कभी गांगुली, कभी तेंदुलकर, कभी एस रमेश, कभी गंभीर, कभी कार्तिक, कभी जाफर, कभी सहवाग, जितने भी हमारे ओपनर्स थे, मैंने एक जोड़ी को कभी इस अंदाज में एक सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए नहीं देखा है। बिकॉज इससे पहले कभी बेसबॉल था नहीं, बहुत कम टीम्स ये रिस्क लेना चाहती थी, और ये रिस्क सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि इंग्लैंड ने बेसबॉल शुरू किया है। Apex is back. I know it's not today's topic, but what's your opinion on Harman's situation? Absolutely terrible umpiring, but equally terrible response from Harmanpreet. That is not the way you talk to people. There are rules. बिल्कुल खराब umpiring हुई थी वहां पे, but I think Harmanpreet was shocked that her team lost or tied a series against Bangladesh. But you do not use such behavior. I absolutely am very, very shocked by Harmanpreet's behavior. Let's get back to the topic of the day. I think match will be finished in max 2 sessions. Well, Nihar, उन्हीं 2 सेशन के अंदर तो बारिश का forecast है। Tanmay saying, so I guess we've seen the last of KS Bharat. Kishan has scored a 50 on a sort of flat pitch, so he'll be the first choice in South Africa. And after that, Pant will return. Very unfortunate and unfair. Tanmay, it's a good point you raised, because I was talking to people, and I said even before Ishan Kishan had come to bat yesterday, I was saying the kind of talk, the kind of chatter, the kind of needle, the kind of rapport, the kind of camaraderie जो भी ये बंदा करता है स्टंप्स के पीछे, you know, cracking jokes, making comments, this is the kind of cricket that Virat Kohli and Rohit Sharma like, you know. Rahul Dravid, the coach, may probably want someone who's a bit old school, someone who's not flashy, but definitely under Kohli, under Rohit, these kinds of fun-loving, aggressive, maverick players are required. So that, to me, even before he came out to bat, I said, you know what, ये लड़का तो साउथ अफ्रीका में करेगा. Now, is it unfair? I don't think so, because KS Bharat got 5 test matches to hold down his place. Of those 5, दोस्तों, 4 of them were in the Border Gavaskar Trophy, where with the bat he didn't do a damn thing, and his keeping actually got progressively worse. He began very well, but in the Ahmedabad test,
there were a lot of fumbles, there was a drop catch. Then in the WTC final, मानता हूं पहली बार ये इंग्लैंड में टेस्ट कीपिंग कर रहे थे, but he was sloppy and once again his batting was horrible. So I would not say it's unfortunate or unfair. I think 5 test matches in this highly competitive era, if you're not scoring runs, if your keeping is not as smooth as many believe, I think Ishan Kishan deserved a chance. Is he going to do the job successfully? Anyone's guess. He's nowhere near as good a keeper as KS Bharat, but his batting was the difference. You needed that kind of innings. But unfortunately, what goes against KS Bharat across 5 test matches is not in one single innings did he show that as a batsman he belonged. So I would not say it was unfair. Just my view, Tanmay, but thank you for your honest comment. Ayush Kere, why are West Indies trying to be so defensive? I don't know, very, very shocking. If they try, they can pose some challenge to India. Look, I said it before on this very channel. I had West Indies winning one of these 2 test matches, but their batting has been so awful. Their bowling has been so awful. Their fielding has been one of the worst I've seen from international team. How can anyone expect this West Indies team, now what we've seen, do anything? Very, very, very shocking. Shanawaz Jode, I don't think India should go for a Bazball approach. It must be used only when required. वही तो मैं कह रहा हूँ. कल का सिचुएशन ने डिमांड किया ऐसे बेसबॉल अप्रोच का. हर बार नहीं खेलना चाहिए. मैं कब से कह रहा हूं. WTC फाइनल में 2-3 प्लेयर्स ने बेसबॉल अप्रोच अटेम्प्ट किया. क्या हुआ? इंडिया की नाक कट गई और आप मैच हार गए. लेकिन शाहनवाज भाई, जब ऐसी कंडीशंस, ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो बेशक आपको करना चाहिए. वही तो मैं कह रहा हूं. इतनी बार धोनी की टीमें, कुंबले की टीमें, द्रविड़ की टीमें, गांगुली की टीमें, कोहली की टीमें, वो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पा चुके हैं जब तेजी से रन बनाना चाहिए था ताकि लीड आगे बढ़ पाए, पर नहीं. वही 50-60 के स्ट्राइक रेट पे इनके ओपोनेंट्स ने वो रन बनाए. बेशक वो टीम जीती है इन सिचुएशन से, बट गिवन द फैक्ट दैट रेन इज फोरकास्टेड एंड यू जस्ट सॉ इंग्लैंड lose a whole day of play, this is what I'm saying. If the conditions demanded, by all means India should go for this Bazball approach. It worked yesterday. जाहिर सी बात है ये कभी और नहीं चलेगा ऐसा, लेकिन कल सिचुएशन ने डिमांड किया और मैं बहुत बहुत खुश हूं कि मेरे 25-28 साल जो मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने कभी किसी इंडियन ओपनर्स को उस अटेम्प्ट से बैटिंग करते हुए नहीं देखा है. Did West Indies do something in first innings or Indians were unable to pick them quick? The conditions were far, far easier. They just approached, they applied themselves. Craig Brathwaite did what he's been doing for 10 years now. He batted 235 balls and he blunted the opposition. What did Craig Brathwaite do in the second innings? He tried to be something that Craig Brathwaite is not. You just need to shun your aggressive shots, try to bat out 4 sessions, and automatically the fielding team will come under pressure, just like what happened on day 3. But on day 4, Mohammed Siraj bowled very, very well. West Indies lower order started playing their shots, started feeling for the balls, and they collapsed. It's that simple. Yes, Kiran, Siraj is such a gem. He's a total gem. We've got a Canadian super chat from Ronak Patel. Thank you, my friend. How are you? What is your question, Ronak? Please, along with your super chat. Love you, buddy. If you want to ask a question, please ask a question. Nihar is saying, disappointed with A team not giving a fight back again. I mean, when you in a final, why do you choose to field? India A lost the match when they chose to field. I was shocked. Will this Bazball technique be successful in Indian conditions, as England team will also come for a tour? Bilkul, I've been talking about those 5 test matches next year a lot on these shows. It's going to be a cracking test series because India is not going to give them the kind of tracks that Bazball works on. Bazball चलता है दोस्तों पाटा विकेट्स पर, जहां बॉल सीम हो रही है, जहां पे उछाल है, जहां बाउंस है, जहां पे टर्न है, वहां बेसबॉल अब तक नहीं चल सकी है. So let's see. India will back their strengths. India will give the same kind of pitches we saw against the Border Gavaskar Trophy in the first 3 test matches. They know the risk attached, but I believe this team will take those risks because वो हरगिज नहीं चाहेंगे कि पाटा विकेट देकर, जैसे कि इंग्लैंड ने किया था उनके साथ 2 साल पहले चेन्नई में, वो दोबारा नहीं चाहेगी ये टीम से. So Bazball is probably not going to work, but Bazball in its theory is going to give India its stiffest home test in the last, I don't know, many years. Good morning, Barun Kumar Sahu. Hope you are doing well. Seriously, WC फाइनल के बाद ये सीरीज देखने में मजा नहीं आ रहा है. मजा बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन कल
जो एक सेशन में बैटिंग करी 7.5 के औसत से जो इन्होंने स्ट्राइकिंग करा, उसको देखने में कुछ तो मजा आया. आई एम ऑल फॉर दिस बैसबॉल अप्रोच इफ इट मेक्स टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग. सच अ बोरिंग सीरीज, सच अ बोरिंग मैच was sparked alive because of Mohammed Siraj and then by India's baseball approach. भाई मैं तो बहुत खुश था. पहली बार पूरी सीरीज में मैं यूं गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है. आई डोंट वांट टू वॉच दिस thoroughly boring batting and flat bowling on these tracks. जहाँ पे थोड़ा मजा आया, जहाँ पे थोड़े चौके चक्के लगे, मैं तो बहुत खुश हूँ frankly. Ashes draw. Ashes, if England win the final test, then it'll be a draw. अभी भी एक टेस्ट मैच बाकी है. Australia cannot lose the Ashes. Even if they lose this match, they will still take the Ashes home. तो अभी draw तो नहीं हुआ. अभी it's 2-1 in favor of Australia. सोनू निगम, सहवाग ने 2, बिल्कुल इसलिए मैंने कहा सहवाग ने 1 या 2 पारी को छोड़ के कभी ऐसी बैटिंग नहीं की, लेकिन उस दिन सिर्फ सहवाग ने किया था, दूसरे वाले ने नहीं किया था. सहवाग मुझे पूरा याद है, मैंने वो मैच पूरा कवर किया था क्रिकइन्फो ऑफिस से. आई नो दैट वाज एग्जांपल. लेकिन मैंने कहा था कभी एक साथ दोनों ओपनर्स ने इस गति से, यानी कि 7.5 के औसत से कभी बैटिंग करते हुए नहीं देखा है. दैट वाज जस्ट सहवाग इंडिविजुअली. इट वाज अ मैच टर्निंग 68-69 that he got on that 4th evening, which allowed India to go and chase that stiff target. But that was one instance. उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा, और उससे पहले कभी देखा. What do you think Rohit should have approached of Brendan McCullum, who in latter half of his career opened the batting and eventually attacked? Look, that's a good question, Ashutosh. I think Rohit Sharma is probably got a year and a half left inside him, maximum 2 years as a combined 2 format. He's not playing T20s anymore. He's moved on from T20s. Probably he has 2 years as a test and one-day opener combined. I believe he should continue opening in one days, but in test maybe he should drop down to allow a younger opener, someone along with Jaiswal to go forward. I don't believe in this कि just क्योंकि आपने एक जगह पे सफलता प्राप्त की है and you're a well-renowned player that you should try and bat in that same place to lead the transition. If you genuinely want to help this team transition into the next stage, maybe drop down until another young opener is discovered. I'm happy the Indian Test team is playing by adapting according to situations. As Dr. Parichai Soni, blasting whenever required. बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ सोनी साहब. इंडिया हैड अ ग्रेट चांस टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. जैसे कि मैंने कहा था, जितना भी मैं क्रिकेट देख रहा हूँ 95 से, मैंने कभी किसी इंडियन टीम को कलेक्टिवली इस अप्रोच से बैटिंग करते हुए नहीं देखा. West Indies seem to be total failure in Test. Absolutely. Can they pose? No. West Indies are actually poorer in the white ball format. आप हैरान मत होइए मेरे इस स्टेटमेंट से. एक सेकंड, कॉफी ठंडी हो रही है. West Indies are a horrible, useless one-day team. आप जानते भी होंगे व्यूअर्स कि इस साल वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए. तो वनडेज में तो भूल जाइए, वनडेज में तो इंडिया इनको 3-0 से पेलेगी. T20s में बहुत लोग इनको डेंजरस मानते हैं, मैं इतना डेंजरस नहीं मानता हूं क्योंकि कंसिस्टेंटली इनका T20 रिकॉर्ड कम होते जा रहा है. ये एक आध सीरीज यहां पे जीते हैं, लेकिन वो इतने निर्भर हैं चंद प्लेयर्स पे, और जब वो चंद प्लेयर्स लीग्स खेल रहे हैं तो अभी वेस्ट इंडीज टीम में वो क्वालिटी नहीं आ रही है जिससे बाकी टीम्स घबराएं और बाकी टीम्स को चैलेंज मिले. तो आई एक्सपेक्ट, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, I expect the T20s to be won 4-1 by India, if not 5-0, and the ODIs will be 3-0 to India. This is going to be one of the easiest overseas assignments in the history of India's cricket system away from home. बताइए दोस्तों, और कुछ सवाल है तो पूछिए, नहीं तो मैं समाप्त करता हूँ इस चैट को. भैया ऑप्टिमिज्म है टीम को लेकर, वैसे नहीं है, बस फिर से नवंबर में दिल टूट ना जाए ओडीआई वर्ल्ड कप में. मैं दोबारा कहूंगा इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाली है. Any more questions that I've missed? Manav is saying, I don't get the concept of rigid playing style from a team unless it's an invincible method. I agree. We should alter our methods depending upon opponent's conditions. That's my favorite. I agree with you. You've said it so well. When they were sledging Jaiswal, he should have just said, will I see you in India in October? Or wait. Well, Jaiswal also it's a good one. West Indies have not qualified, but Jaiswal's also not going to be in the World Cup squad. So he himself couldn't have said that, okay, I'll see you in October. But yeah, West Indies are a walking bunch of zombies right now. So sad to see how bad their cricket has fallen. Have I missed any questions? I think I've got all the questions.
Have always heard of the terrorizing West Indies fast bowling quartet, says Shubhajit. Walsh, Ambrose, etc. Well, before them there was Holden, Garner, Roberts, and Marshall. What happened to the West Indies pitches that they became so flat, dead, and spin friendly? The fast bowling quality started to dip. Batting became easier. One days were sort of more popular. But I think it just goes back to the culture of cricket. A lot of players just do not take cricket seriously anymore. Not enough of the icons which you mentioned, the pace bowling icons, have come forward. It's very, very obvious that evolving teams and next generation need to look up and see inspiring figures. And there were just not too many inspiring figures. Then T20 came along, which needs flat track. So I think West Indies just put all their eggs in the T20 basket, and unfortunately their test cricket and their pitches started to dip. I cannot remember, it's been decades since I've seen a proper nasty pitch in the West Indies which had bounce and which was dangerous. I don't mean dangerous like Sabina Park where the match had to be called off in a couple overs. Happened twice, once in the 90s, once in 2010 or 12, I'm not sure when it was. Jerome Taylor bowled a nasty spell to England. But overall, it's just you don't have quality pacers coming through. Your board is caught up in a lot of muck and fighting with the players and the players' agents and the players' representative body. And unfortunately, the test scenario ends up losing out. So very, very sad. चलिए, I don't see any more questions coming in. मुझे जो बोलना है मैं बोल चुका हूँ. आप लोग ने अगर आज का वीडियो नहीं देखा है जो मैंने अपलोड किया है, तो let me bring up today's review video right for you on the screen. I'll paste the link here. आप प्लीज इस वीडियो को देख सकते हैं. This is today's video. Please like, share, comment. There's today's review video. Can Umran Malik be a good option for test, especially in the Sena countries? Ayush, in theory, yes, but if I'm not mistaken, Umran Malik has barely played. Umran Malik has played, I think, 4 to 5 first-class matches in his career. He's played 7 first-class matches, Ayush, in which he's taken only 12 wickets at a strike rate of 62.6 and average of 46.66. और उमरान का आखिरी फर्स्ट क्लास मैच दिसंबर 2022 में था दोस्तों, जब उमरान मलिक खुद एक रेड बॉल क्रिकेटर नहीं है. आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू इवन ट्राई हिम इन टेस्ट. I hope we can see this Bazball approach when needed again in Sena. Yes, Nihar, the key thing is when needed. When needed. Not every time, not once in a blue moon, but when needed. Shanawaz कह रहे हैं, Jamie, I have an interesting question. Can Jadeja score 4,000 runs and 400 wickets? Well, let's go see how many he has right now. Ravindra Jadeja का record क्या है? Jadeja के पास फिलहाल है अभी 2743 runs and 273 wickets. Jadeja is, he's almost 35. देखिए शाहनवाज भाई काफी इंजरी से जूझ चुके हैं रविंद्र जडेजा. वो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स भी हैं, वो T20s खेलते हैं, वनडेज खेलते हैं. अगर जडेजा अभी जो 34 के हैं, जो 35 होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, अगर वो अपने आप को फिट रख सके तीनों फॉर्मेट्स में और बहुत जल्द एक फॉर्मेट छोड़ दें, फिर मे बी ही कैन गेट. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ बिकॉज इफ he's on 273 wickets. That means he's going to have to play for 2.5 more years to get anywhere near 400. It's possible. I would not rule it out, but it's going to be very, very tough. I would like to see Jadeja become a 4,000 run and a 400 wicket batsman. Your views on Pak using experienced players, 28. Look, it's not the first team they're doing it. सौम्या सरकार जो बांग्लादेश के बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर हैं. मैंने उनको 2015 वर्ल्ड कप में देखा. तो जो इंसान 2 बार वर्ल्ड कप खेल चुका है, T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, जब वो बांग्लादेश के लिए खेल रहा है, then the whole tournament is a bit of a joke. So it's not just Pakistan. इंडिया ने जो टीम भेजा वहां पे, it's actually an emerging team. अफगानिस्तान ने जो टीम भेजा, इट्स एक्चुअली एन इमर्जिंग टीम. आई वाज शॉक्ड. और मैंने एक बांग्लादेश जर्नलिस्ट से, मेरे दोस्त मोहम्मद इसाम, मैंने उनसे पूछा भी मैसेज पे कि भाई ये सौम्या सरकार क्यों खेल रहा है, एंड द जवाब ही गेव जस्ट अंडरलाइंड व्हाई दिस टूर्नामेंट इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली. नाउ देयर इज नो सच रूल बिकॉज इट्स अ एसीसी टूर्नामेंट एंड वी ऑल नो कि एसीसी का क्या मजाक बन चुका है पिछले कुछ महीनों में. आप सब वाकिफ हैं, मैंने शोज भी केस पे. तो जब एशियन क्रिकेट काउंसिल खुद एक मजाक बन चुकी है, कैन वी एक्चुअली एक्सपेक्ट
any rules to be written out. If you're actually calling it an emerging players tournament, then your team should be like the Afghanistan team and the Indian team. You should not have Pakistan players, but more than Pakistan, मुझे ज़्यादा दिक्कत बांग्लादेश की टीम के साथ हुई. उनके पास इतने प्लेयर्स थे जो टेस्ट, वनडे और T20 खेल चुके हैं बांग्लादेश के लिए. So how in the world was this an emerging Asia Cup? मेरे समझ से बाहर है. This series would have been much more interesting at Barbados and Jamaican grounds. Yes, to an extent, but given how poor the West Indies have been, I don't think it would have made that much of a difference. भाई मैं ऑलरेडी अपने सवाल और अपने जवाब दे चुका हूँ हरमनप्रीत पे. आप ये स्ट्रीम देख सकते हैं. ऑलरेडी 3 बार मैं कह चुका हूँ. Vidwat Kavarappa should be fast tracked in Indian cricket. Not yet. Give him a couple more seasons. We made the mistake of fast tracking too many players and we paid the price. Abhi time hai. Give him a full year of India A cricket and then we'll see. I hope the India A system comes back. ACC is just a shell company of the BCCI. Bilkul Varun Kumar. That's why I said wo mazak hai. How long will Jadeja play all 3 formats? Probably won't play T20s beyond next year's T20 World Cup. Probably will have to phase out one days in the next 2 years. Given how successful, given how impactful, given how much he loves playing Test cricket, I believe, like Virat Kohli, he will, and Ashwin, he will play Test cricket the longest. If he plays another 2 years of Test cricket, he will come close to getting the 4,000 runs and the 400 wickets that Shahnawaz Haider was asking about. But combined 3 formats, if you're talking about that, not more than 2 years. चलिए कॉफी खत्म हो चुकी है, सवाल खत्म हो चुके हैं. Thank you all for joining. Do watch that video that I did today. There is it. Australia winning Ashes. They have to win the last Test match. They've already retained the Ashes, but I think the momentum is still very, very much with England going into the 5th Test match at Old Trafford. चलिए दोस्तों, thank you for your comments. Do like, share and subscribe. मैं आपसे कल मिलता हूँ एक और रिव्यू वीडियो के साथ और साथ में एक और लाइव स्ट्रीम में. लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ ग्रेट मंडे. दिस इज जेमी ऑल्टर सेइंग गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.